Hey, hi everyone. So, welcome to our webinar today. We have with us Arvind ji live today. The topic that we have for today is small cap investing. Is it a bubble or is it a beginning of something new? So, before Arvind ji takes over the mic with me, I just want to give you a brief introduction of Arvind ji. So, Arvind ji is a chartered accountant. He is a fund manager on Niveshaay, where he manages the famous portfolios of green energy and mid and small cap focused portfolio. Arvindji has a stellar record of picking out small cap companies which have performed well over the years. And one thing that I've noticed truly amazing about Arvindji is he pays very keen attention on identifying companies which are looking at capex decisions and how are they utilizing such kind of capex decision and how is the capex decision panning out for him. So the flow of the webinar will be such in which Arvindji will share his insights for the first 20 to 30 minutes. And post that, we'll be live with answering all your questions and answers. If in case we miss any of your questions, we'll be sharing a Google form at the end and you can share your questions and we'll get back to you on this. So Arvindji, the screen is all yours. Please take it ahead. Thank you so much for this warm introduction, Aditya. Hello, everyone. Pleasure to be here. I'll just share the brief disclaimer that whatever stocks we discuss today are, please don't take them as a recommendation. It is just for illustration purpose, and please do your own due diligence and consult your financial advisor. We are a SEBI registered investment advisor. So my first question to you, sir, is after the mid Nifty small cap index has reached an all-time high that we have seen, they've shown a stellar record of uptrend in the past 1 year. What is your Yeah. outlook on the rally, and do you believe it is trading at overvalued levels, or you still see there are pockets of investing and value left in the market? Yeah, it is, a fairly, you can say, discussed question. And this is actually playing in the minds of a lot of investors right now because they've seen a huge rally post March. And everyone is now, maybe coming on TV, and a lot of fund managers are talking about how overvalued the small caps are and how undervalued the large caps are. See, my point over here is that we also believe that the markets have run up a lot, but you need to take care what are the earnings that we are looking at. See, market is nothing but a slave of earnings. If the earnings are growing fast, market valuation gets justified. And I'll try to draw a lot of parallels from past bubbles and past peaks to draw home some points, whether we are still in the bubble trap territory or we still at the beginning stage of a lot of sectors or not. And maybe 6 months ago when we had a webinar again, we were talking about that how in March the whole market had collapsed in a way because of a lot of geopolitical tensions and things that did not matter to earnings, and those are the best periods to invest. Though the valuations that have gone up now, maybe lump sum investing doesn't make that much sense still, but doing SIP kind of investing or putting money in stocks which are still trading at lower multiples compared to their earnings makes sense, is what I will tell to most of our users. But the point is that Nifty and Sensex both have not done as well as small cap because their earnings have lagged. See, it is always a factor of how strong the earnings momentum is. In 2017-18, when the bubble of mid cap burst, that time the stock prices had gone up, but the earnings did not catch up. So if you look at the P multiple relative to Nifty, the Nifty P was. But today, it is almost equal. It is 0.94. The P of small cap is still below Nifty P. So that is saying that your small cap stocks are rallying because they are earning more, which is not a fundamental problem. And if you look at the sectors which are doing well, they're typically sectors where there are small cap companies. They're not large cap companies in those sectors. For example, renewable energy is doing well. And renewable energy, you don't have companies more than 10, 15, 20,000 crores market cap in the whole of our country. So if a stock is doing well, it might be a 2,000 crore or a 3,000 crore company. For example, Borosil Renewal is the only solar glass manufacturer in this country. In 2021, when we identified it, market cap was close to 1,500 crores. It went to 8,000 crores, right? But the point is, it is going to remain a small cap because the size of the opportunity is evolving. It is
not. We majorly, focus on stocks which are doing niche businesses and are high market share, right? So, for example, someone who's into shunt manufacturing for EV vehicles, the only manufacturer in our country, perhaps the largest manufacturer of the, whole of Asia. That company was just a 600-700 crores market cap company few years ago, right? And it's still a small cap, still is only, worth 4,000 crores. So my point is, if you're seeing defense doing well, if you're seeing capital goods doing well, if you're seeing, a lot of manufacturing do well, if you're seeing a lot of renewable energy doing well, all the companies, major companies in these baskets are small caps. They're not large caps. These sectors which were doing well the past 15 years, they were large caps, like consumption, like banks, like a lot of, you can say, companies which were catering to the whole consumption theme in our economy, right? Or the IT theme in the economy. If you see 20 years, we had a bull run in IT services in our country. Hence, a TCS got a large cap. Hence, a Infosys became a large cap, right? So you need to understand that the current structure of our economy is that we have a boom in manufacturing. We have a boom in capital expenditure. A lot of supply chains are getting rearranged in the world, right? For example, textiles, there's a talk of shifting from China and Bangladesh to our country. So most of these textile companies are small caps, and they're going to remain small cap for a long period of time till they hit a profit pool where they get that P multiple also re-rates, their profits also pools go up, and then they become large caps. So my whole point is that don't look at this market in terms of why small caps are more expensive or large caps are cheap. Don't make your decision based on this plain simple fact. You have to follow which sectors are doing good, A, and B, which are those entrepreneurs who are winning in this sector. Don't go to a small cap company who is not a leader in that space. Definitely the valuations have gone up over there and they don't have the quality of business, and your head would get handed to you if you buy at those valuations, would not make much returns, right? So go with business people or business owners who have grown their profit pool and still are doing capex and will grow their profit pool over the coming 4-5 years. See, please understand, and I'm very much, inspired by the economic miracle that happened in US for that matter, or China for that matter. There were these 25-30 years which completely changed those nations. And that kind of economic miracle is possible in our country, which is unfolding in front of us, right? Post-COVID, we are in an era where Indian entrepreneurship has taken a lead in the world, and we are becoming world famous for a lot of our products in engineering, in renewable energy, in a lot of other spaces where we were not there few years ago. Only China was dominant. Chemicals, pharma, we've grown substantially in those sectors, right? So why is that our country cannot make billionaires, which a US or other countries have made when they were going through that economic, miracle? So the point is, if there were only 60, 70 companies which made, billionaires, there'll be at least 400-500 companies which will make more billionaires in our country. Real estate was a sector which was forgotten, but now as we grow rich, we have more money at our hand. We are buying more real estate. We are buying larger spaces, right? Be it in Bangalore, Bombay, we are seeing a lot of, luxury projects doing well. We are seeing sales of luxury cars doing well. We are seeing sales of luxury watches doing well, which is saying something, right? Which is saying that a lot of millionaires are, there in our country, and they're growing their wealth fast. So you need to identify families who are capable of becoming billionaires. Today, their market cap or their wealth may be just 1,000, 2,000, 3,000 crores, but their wealth will swell to 10, 15, 20,000 crores in the coming years. And that is the drive that a lot of young entrepreneurs and the older families have right now, because they've struggled so many years of their life because manufacturing or other policy decision or other nations were not that supportive. Today, we have an economic environment where the RBI has displayed one of the best monetary policies which is prevalent around the world. We have a government which is supportive in terms of giving PLI and advantage to industries wherever they're struggling. We have, the whole world who's wanting to come over here and manufacture more because they want an alternate supply chain away from China, right? Apple has been doing that. A lot of giants in other manufacturing are talking about these. We have these cutouts of a lot of annual, report statement for a lot of these MNCs where they are saying that we want to, diversify and come to India and set up our base over here. So
I mean, we are in a period which is not like what we were in the previous decade. So we need to make investment decisions which were not like that we did in the previous decade. The whole argument is that because our memories are ingrained to what happened in the past 15 years, and that is where every time there was a small cap rally, it got busted and there were large caps which went ahead. But that period was different. And a lot of investors are losing their sleep over it because they're selling small caps and buying large cap whenever this rally is happening. It is because of the previous, mental bias. It is not that they're focusing on what is the future. So please don't make that mistake that you're selling a winner in your portfolio just to buy something which historically has done. See, history rhymes, but it does not repeat. You need to take lessons from the history, but you need to analyze what is the current structure. See, companies like an ITC or HDFC Bank or a lot of these large cap Infosys of the world, TCS of the world, brought our country to where we are today. And we are very much proud for them because those displayed that kind of economic resilience amongst a lot of odds and they've come here. But the structure of the economy, if we were to go to a 5, 10, $15 trillion economy, it will change. Apple was nowhere in the US when it was a 2, $3 trillion economy. Apple became Apple when US transformed to a $10 trillion economy, right? So you have to understand that nature and structure of businesses change when the structure of economy changes. And we are not in an economy which was of the 2008 aftermath of the financial crisis, and hence everyone was just struggling, and there was China which kept on rising. Today, India is rising, and we need to bet on companies which are rising and sectors which will perform exceptionally well. Forget about what rally has happened over the past 6 months. Nasdaq made its bottom in 2000 when there was a whole bubble that crashed in the year 2000, right? But when the profit pool expanded over the coming 20 years, the only trade in the whole world was to go and buy a Nasdaq listed company, because the only index which went up 10, 15x over that period was the Nasdaq index. There was no index in the world which did that, right? So if you're saying 2017 was a bubble and it got bust over 18, 19, and 20, now is the rise of the similar kind of a period where there was no profit pool in Nasdaq companies in the year 2000, and hence they crashed. And then the rally started when they figured out their profitability, when they figured out how they want to address the market. Similar thing is happening. The Indian defense, Indian capital goods, India engineering, India manufacturing, their profit pool did not grow in 2017-18. Hence, they crashed. And there was a mini economic crisis where Yes Bank happened, DHFL happened, which accentuated that crash. But the point is, today, these companies are earning more profits, they're growing faster, and hence we can have an economic miracle over here. We can have an index which can outperform for a longer period of time. I'm not saying that put 100% of money in this basket, but don't ignore this basket. This is a basket where the earnings growth is expected to do far, far better than the earnings of the large cap, because I feel that a lot of sectors are poised to, become world leaders in low tech, low manufacturing, or low end engineering, or textile spaces, and that is where we are placing our bets. And there are data to, as I told you, prove that, right? So when in 2003 to 8 this rally of small caps were happening, the index of small cap was almost 2.5 times, the index of Nifty, and we crashed to 0.8. Today we are back at 1.9 or something. We still not reached the peaks of 2005-6 where we were at 2.6, but we are expensive. But what I'm trying to tell you is that we can remain expensive if earnings keep on coming. 2005, 6, 7, the earnings did come. And when the earnings started to falter, that is when the crash, right? So the point is, look at the company. And the problem in 2005, 6, 7, or 2008 was the cash flows were not matching with the earnings growth. So what was happening is most of these companies were either in the power sector or in sectors which were emerging, and they were growing their sales very fast. But like in emerging sectors, the sales grow, but the cash flows don't come that fast, and hence there's a disruption. Like there's a startup disruption happening right now. Most of these companies went up post-COVID, but now people are figuring out that they don't have cash flows.
and hence they are rearranging their portfolios. So the point is, currently what we are seeing is the small caps are having very healthy cash flows, which are equally growing to their earnings. They're not taking higher debt as they were taking in the previous cycle of 2005-6 to grow. So the debt levels are less. The earnings growth is almost equal or faster. The cash flow is matching the earnings growth. So we are in a kind of a cycle where the balance sheet is better than 2007-8. The earnings quality is better because the cash flow is matching. And hence we can be surprised by how the performance of these companies can be. And as I told you, forget about all these. Concentrate on which are the entrepreneurs which can become billionaires and marry with them for the coming decade, and you'll have fantastic returns. That is what is my belief. I can go completely wrong, but I would say don't ignore the small cap space just because the valuation side. That is not the way to look at So just to summarize you, the rally that we saw that fizzled out in 2018 is nothing that is happening in 2023. Valuations are not a bubble. Valuations are backed by fundamentals and earnings that have grown. it. Yes, And you made a yes. very nice analogy that the small cap index is similar to Nasdaq. So is your view that like Nasdaq has rallied, the small cap 250 index will see a similar kind of thing in the next decade to come? See, the ingredients are there. What I'm saying is that small caps would always have valuation which will go out of whack. So there'll be crashes like 30%, which will make you nervous. And last year happened, right? Last year we had small cap index falling down by close to 32%. And that was a time when you should be putting capital. What I'm saying is that we are in a different economy. You need to be backing these companies which are in certain sectors, and generally these sector companies are in small caps. I cannot help it, they're not in large caps, so I cannot not bet on them, right? So when I'm thinking about making my own family portfolio, what I'm doing is, I see, having a long-term frame of mind, works. Having a frame of mind that Nasdaq would rally for a decade. If you had that, you utilized all the crashes well, right? What I'm saying Correct. is that you need to make sure that the winners are going to come from these companies. You need to have a frame of mind that, boss, I need to be ready to take the opportunities whenever they come my way. The opportunities came coming, knocking to your door last year when a Russia-Ukraine war happened, and a lot of these companies crashed by 40, 45%, but they're recovered those crash and gone up 2, 3x more, right? So similar things would keep on happening in that space. You need to make sure that you are invested in this basket and incrementally deploy cash whenever there is a crash kind of a scenario, because it is a long-term trend that these sectors are. See, for example, if you look at electronics manufacturing in our country, you look at solar module manufacturing in our country, you look at textile manufacturing in our country, there are long-term tailwinds. Look at textile for that matter. The wages in Bangladesh, which is a key competitor right now, are set to go up almost double the next year because there's an election and all political parties want to appease their vote bank, and the wages are not gone up for a long period of time. So that will mean a blow to their competitiveness, right? Second thing is that there is a UK FTA that might happen at the end of this month or before Diwali. That is what the political rounds are doing. If that happens, I have a lot of my friends, my colleagues who are CFOs in large global textile organizations, and they've been given a mandate that soon as this FTA happens, you have to diversify away from Bangladesh to India almost 10, 20, 30% of your sourcing, because they're dependent almost 70% for their sourcing on a single country. So they Correct. don't want what happened when they went to China and they Correct. had to, go back to a new country. Same thing happened in Bangladesh, right? They want it diversified. So where will they go? Wherever they've gone in Southeast Asia, those countries are small, right? They went to Vietnam, they went to Laos. They're smaller countries, they cannot handle more volumes. Vietnam, the wages have gone up so much that now textile, low-end textile is not competitive over there anymore. So think about it. All Asian countries are aging, except for ours. Mostly Correct. developing world was aging, but now large Asian economies are aging. Where is their young, and textile is a labor intensive business. So think about a global textile company or a brand. You will want to have your presence in India if you want your long-term outsourcing to be stable, right?
Why do you think Apple is coming to India? Why do you think these, electronics majors are coming and setting up their manufacturing in our country? Because we have that manpower for the coming 2 decades, and that is what drives these long-term decisions. See, shifting services can be a short-term decision because they can be shifted again in some other country. But shifting manufacturing is a long-term decision. You cannot go to a country unless you have infrastructure, unless you have physical asset. That's why manufacturing shift takes time, and it has taken time to come. Hence, they are disbelievers. The more I meet, these people who've not invested in small caps, I understand where they're coming from. I understand what bias they have because they've never seen manufacturing come in our country. In fact, the last decade, textile manufacturing went away to Bangladesh, did not come to India. But things have changed on ground. That is a long, and because we are such a small, you can say, base right now, there's a huge scope because we have a booming textile market of our indigenous, you can say, consumption, right? So because we have that, we already have that scale. We have scalable spinners. We have people who have scaled in a lot of processes of textile. The ancillary industry is already there, but they were feeding the domestic market. We need to shift focus, shift gears, and tell them to focus on the export markets, and they are doing. And the home textile industry, for that matter, has become a leader in the US in a lot of subsegments, and is now knocking on the door of the Europe. Whenever the FTA happens, these would be the primary beneficiaries, because US did not have a duty advantage, but Europe has a duty advantage with a Pakistan or a Sri Lanka or maybe a Bangladesh, which, if it goes away, we will be doing phenomenally well. So what I'm trying to tell you that there are sectors where a decade should be good. So you use that acumen. Be clear in your mind, be peaceful in your mind that how do you want to time the corrections. If you time those corrections well, if you invest those periods of time, that will reward you supremely, is what I'm trying to tell you. So, sir, you said that the Russia-Ukraine conflict was a good time to invest into the stock market. So now we Yeah, are seeing geopolitical uncertainty with Israel. So do you think this again, is we the are time seeing where that. you should Yes, be deploying additional funds by SIP or by lump sum? This is the main question that user have कि SIP करे या फिर lump sum करे अभी के market में. correct. So currently the market is of doing SIP. You cannot put in lump sum money because the valuation really, for the past 2 months also. See, the point is that valuation started to go up post March, but a lot of people were not investing till June, July, and we were insisting even till August to put in lump sum. But the rally over the past 1.5 months has surprised us as well. So you cannot go on a Correct. single street way up. So you should not be making decision of lump sum investing for sure right now. But if you're not in the game, you will be out, right? So the point is still you need to deploy some capital to be in the game. Now you'll say, if I know the valuation are high, why should I? Because you don't know what the earnings trajectory is going to happen, right? So for example, a lot of companies who have already declared their earnings in October right now, we were surprised. A defense company which was, making these, so they used to work with the Indian Navy and was one of the only suppliers of, equipment to, satellite communication equipment for the Navy, that margins, has surprised and gone up to 42% kind of margin. Now, that kind of Yes, sir. EBITDA That is margins are unheard of. But they've suffered in the past because they had developed products, done R&D, which was almost 6, 7, 8% of their sales. And the sales were not growing because the Indian government did not have the mindset to develop the Indian market. But now the policy has changed. India sourcing is on the mind of, so for example, in Navy itself, the offtake or in defense used to happen 3, 4 years post their announcement of a product. And mostly these, there were companies which were, making ways around for those rules because they will import most of the things and just label it in India and say, we've done value add. But now there are checks for value add, whether you've done this 20% value add in our country or not, this 30% value add in our country or not. You cannot move around like that now. The offtakes, which used to take 4 years, are now happening in 8, 9 months. They are getting payments on milestone basis, which is unheard of, right? Most of these companies are facing working capital challenges which are not there. So even though the stock was, I thought, was overvalued, and I was not investing, myself, because whatever I invested in the past, I thought is already rallied a lot. Let me not put in fresh money. But post the
result has gone up 25-30% more, even on an elevated valuation. So you cannot 100% say how stocks are going to behave when there is an earnings momentum. So you need to be there so that you see which stocks are doing well and which are not. Move away from stocks which are not doing well in terms of their earnings and build your position then in stocks which are doing well and their earnings are growing fast. If I hear you right, it is difficult to time small cap investing. You need to be patient, dedicated, Yes, and there for the long term. And in yes, such kind of yes, scenario, it is good to have a SIP, which is steadily investing. And if there yes. is some drawdown in the portfolio, it Lump is sum averaging your investing. stocks. Yeah, in correction, you should do lump sum investing for sure. One of the main questions that user ask us, small case, and I am sure they will be asking you as well, that how much percentage allocation should be there to small caps in general? मेरा portfolio अगर 100 रुपए का है तो small cap में कितना रखूं मैं? See, as a financial advisor, my advice would be, that you should not put more than 25-30% of your money in small cap. But see, the point is, it is dependent from individual to individual. My whole family's net worth is in small caps. And I Okay, don't so the know big any thing. other game, right? I don't know any other game to play in the markets. You look at the stalwarts of our country, be it, Vijay Kedia or, Mr. Rakesh Junjunwala, all those people had almost most of their net worth in companies which were small earlier and then they became large caps, right? So the point is, what kind of wealth creation journey you've done and what kind of wealth creation journey do you want to, pursue going forward? If you feel that you can handle volatility, you are a long-term investor, you think in terms of 5-7 years, you are not perturbed with price fluctuations a lot because small caps typically have higher fluctuations than large caps. If you feel that you can give time to your investing, you also give time on weekends, for example, to understand what is happening to your portfolio. You can do these kind of things. Then you can take your small cap allocation from 20% to whatever 30, 40, 50%, whatever is comfortability you're at. But if you're not, if you lose a night's sleep, if your portfolio falls by 10% in a week, which will happen in small caps, then you should not do it, right? You should maybe invest just 10%, 20% of your money in small caps. So it is an individual's decision. But if you're young, if you can handle risk, I would suggest building a lot. Because see, if you're young and just, making your portfolio, even if you lose 30-40% of your portfolio, it's not going to matter to you. But you need to give your money a chance to grow fast. I'm not a big fan of people who say right at the front, I don't want to take risks. I am a 25-year-old guy or a 30-year-old guy, and I want to do large cap SIP and large cap investing. I just want to buy the Infosys, TCS, HDFC banks of the world and just forget it for 20 years. That had worked 20 years ago. Correct. That will not work for you when you do it right now because these are companies at market cap. It is very difficult for their earnings to grow at 20% from now. These stocks have given you 20% compounding over the past 20 years because their earnings were like small caps way back and they've grown here. Now their earnings cannot mathematically grow, 20-25% on these bases. And we are not a country like US where we have giants like Apple or Google who are becoming MNCs or growing to markets geographically. We're confined within our market, right? So you need to find companies which are growing their earnings at 25%, 30%, then your portfolio would go up. And hence, you should, I guess, in your early age, for sure, focus on building a portfolio around small caps, is what I would say. Got it. So our users are commenting that please add some bit of Hindi and English to it so that they can understand. So even for everyone's sake, we'll try to add Yeah. in more Hindi into the way we are या सो speaking. So, सी मैं ना ये जो डिबेट है ना मेरे को थोड़ा सा परेशान इसलिए करता है बिकॉज पॉइंट ये है कि हर एक डिबेट जो हमारी हो रही है वो इस पे हो रही है कि आज वैल्यूएशन ज्यादा या ये है। सी मार्केट की एबिलिटी होती है आपको सरप्राइज करने की, हमारी एबिलिटी नहीं होती है सरप्राइज होने की। हम ही बहुत ज्यादा नंबर्स 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 सोचते हैं। दुनिया में सारी चीज नंबर से नहीं चलती है। इवेंचुअली आपको विजन भी होना चाहिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर के विजन के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और 5-7 साल रुकते हैं तो आपका पैसा लंबा बनता है। यू हैव टू फोकस ऑन बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर। मैं छोटी सी स्टोरी बोलूंगा यहाँ पे टू प्रूव माय पॉइंट। रोज ब्लमकिन करके देयर वाज अ लेडी इन द यूएस। she was actually a refugee into US. She came to US, she couldn't read and write। और ये फेमस स्टोरी वॉरेन बुफे ने बताई है, बहुत बार आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा। बट प्लीज understand
एंड लिसन वेरी केयरफुली, उनको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। वो यूएस आई, she had crossed her 50s, and she when she saved her first $3,000, उन्होंने एक बिजनेस चालू किया फर्नीचर मार्ट का, राइट, फर्नीचर के कारपेट्स लेके बेचने का, और ऐसा एक फर्नीचर मार्ट का बिजनेस जो बाद में जाके नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट बना। वॉरेन बुफेट ने रोज ब्लमकिन से वो बिजनेस $500 मिलियन में खरीदा, राइट। वो बिजनेस जो $2,500 से चालू हुआ, वो विजन थी रोज ब्लमकिन की, टू कम इन अ कंट्री वेयर शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। रेड क्रॉस ने उनको वो वैसी एक स्लेट टांग के आई थी कि मैं इस स्टेट में जाना चाहती हूँ, क्योंकि उनको तो लिखना पढ़ना नहीं आता था, वो जहां से आई थी उनको स्लेट डाल के भेजा गया था। उनको रेड क्रॉस ने वहां पहुंचाया जहां पे वो जाना चाहती थी। वो 10-15 साल तक स्ट्रगल करी, लैंग्वेज पिकअप नहीं कर पाई। फिर उनकी ग्रैंड डॉटर से उन्होंने थोड़ी बहुत लैंग्वेज पिकअप करी, बिजनेस करना सीखा, लेकिन ड्राइव थी, राइट। आज हमारी कंट्री में बहुत एंटरप्रेन्योर में वो ड्राइव है, क्योंकि उन्होंने 20 साल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बट either they were a failure or they just made a 100 crore business, 200-500 crore business। आज उनमें वो ड्राइव है। मैं मिलता हूँ लोगों से ऑन ग्राउंड में, 15 दिन घूमता हूँ, मैं लोगों में वो ड्राइव देखता हूँ, दैट दे वांट टू मेक देयर फैमिली $1 billion फैमिलीज। वो ड्राइव के साथ आपको अगर जुड़ना है ना, वो लार्ज कैप में मिलना मुश्किल है बॉस। आज जिसका खुद का वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ का है ना, वो नहीं वो ड्राइव रखता है। उसकी ड्राइव कभी थी, वो अचीव हो गई। आज उधर प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, वहां पे खुद ओनर धंधे में नहीं बैठ रहा है। मेरे को चाहिए धंधा जहां पे आज भी वो संडे भी जाके अपनी फैक्ट्री पे बैठता है, उसमें वो ड्राइव है आज भी अपनी कंपनी को 10-15-20-50 हजार करोड़ की कंपनी बनाने का। और मैं उस ड्राइव के साथ इन्वेस्ट करता हूँ। वहां पे नंबर्स कभी ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे, लेकिन अगर मैं 10 साल उनके साथ बैठ गया ना, तो मेरे को लगता है भाई मेरा पैसा बच जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप उस तरह की इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, राइट, बिकॉज आवर कंट्री विल क्रिएट दीज बिलियनर्स, तो ही आप इतना रिस्क लो। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ 15% रिटर्न तो हमारी कंट्री में कैपेबिलिटी है यार, आवर कंट्री इज गोना डू एक्सेप्शनली वेल। कहीं से भी 10-15-12% पैसा बन जाए। अगर आप ऐसे इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो मेरे को ये सब डिस्कशन बड़ा ही, बिकॉज देर आर बिजनेसेस एंड देर आर एंटरप्रेन्योर्स, राइट। ये किसने बनाया स्मॉल कैप लार्ज कैप? ये तो हम लोग बनाते हैं ना। इट Right. इज अस फिनेंशियल पीपल जो ये जार्गन्स बनाते हैं, और आपको मार्केट को तो नहीं पता है ना। मार्केट में तो हर 15-20 साल में लार्ज कैप्स चेंज होते हैं ना। वो क्यों चेंज होते हैं? हम नए मिड कैप्स इमर्ज होते हैं ना, वो इसलिए इमर्ज होते हैं क्योंकि धंधा अच्छा करता है। तो आपको बिजनेस पे फोकस करना है, उस विजनरी पे फोकस करना है, उस हार्ड वर्कर पे फोकस करना है जो ये करना चाहता है और करेगा, और बैठ करना है यार। मतलब ये सिंपल है इन्वेस्टिंग। हम लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं बहुत ज्यादा बकेट्स में डाल के। टू सिंप्लीफाई आई वांटेड द ऑडियंस की जो भी मैंने डेटा बोला उसके बियॉन्ड ये एग्जांपल है, और इसको फोकस करके इन्वेस्टिंग करो तो इट्स ऑलवेज बेटर। So to summarize, अगर आप नए इन्वेस्टर हो मार्केट में या फिर स्टार्ट कर रहे हो और रिस्क एपेटाइट कम है तो मिनिमम 25% या उससे कम इन्वेस्टमेंट रख सकते हो स्मॉल कैप्स में। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हो, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न देख रहे हो, तो आप बढ़ा सकते हो, पर आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए और आपको एक ट्रैक रखना चाहिए कि ये कंपनी कहाँ पे और कहाँ पे जा रही है। और जैसे करेक्ट। अरविंद जी ने बोला कि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये आपका कि आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं चाहिए, आपको वो आदमी चाहिए जो खुद धंधा कर रहा है और खुद कंपनी ड्राइव कर रहा है। तो दैट ऑफ वाज अ कोर्स। इंटरेस्टिंग insight. Even I'll keep a note that who is done by a professional management and who is the business owner actually. So next question is a very interesting question. Recently आपका ट्वीट लोगों ने देखा था जिसमें you had visited a AGM. So how does Yeah. it help in making investment decisions by attending a AGM? So if you can show some light on it, even people like you and more retail investors like us will try to attend and listen to what a AGM is. AGM, for everyone's reference, is annual general meeting of a company. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आस्क अस कि यार क्यों इतना ट्रैवल कर दो ऑल द वे जाके आप एजीएम अटेंड करते हो। कोई एजीएम मान लो हो रही है बंगाल में, कोई एजीएम हो रही है आपकी नॉर्थ में, मान लो हिमाचल प्रदेश में, कोई चेन्नई में हो रही है। So this year attended almost 50 AGMs in our team, offline, physical, and almost 500 AGMs online. Reason is कि बहुत सारी कंपनीज हमारी कंट्री में आज भी ऐसी है जो कि अच्छा बिजनेस करती है, अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ करती है, बट कहीं ना कहीं कॉन कॉल्स नहीं करती है, या कई जगह पे प्लांट में क्या हो रहा है वो हमको फिजिकली जाके देखने का बड़ा मन होता है, क्या ग्रोथ हुई है।
सो कई बार एजीएम में जाके ना आप फैमिली से बात कर पाते हैं, जो ओनर फैमिली पूरी होती है, उनके न्यू जनरेशन में जो ज्वाइन किए वो भी होते हैं, वो उनकी सीनियर मैनेजमेंट होती है, प्रमोटर खुद होते हैं। तो आप बहुत ही कैंडिड डिस्कशन कर पाते हैं, जो जनरली एक कॉन कॉल पे कई बार नहीं हो पाता है। जनरली कई जगह पे आपको जाके तो इम्प्रूवमेंट पता चलता है कि कौन सी मशीनरी थी पहले, अभी क्या आ गई है, ऑटोमेशन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है प्लांट में, राइट, एनर्जी कैसी लग रही है, ऑर्डर बुक्स का थोड़ा आइडिया लगता है कि शॉप फ्लोर पे काम कैसा चल रहा है, क्योंकि जनरली एजीएम के बाद वो लोग प्लांट विजिट भी कराते हैं। तो वो एक दिन ले जाके आपको, यू ट्राई टू स्पेंड एंड थिंक दैट द बिजनेस दैट यूर ओनिंग, पिछले साल जब मैंने विजिट किया, इस साल क्या प्रोग्रेस किया है, वो मैं किसी भी तरह ऑनलाइन तो नहीं देख सकता हूँ ना। आई कैन नॉट हैव दैट थिंग on an online phone call, or I cannot have that thing by just reading the annual report, right? So hence we take that, you can say, pain to go to the AGMs, and that is rewarding in terms of picking up a lot of progress on ground, at the same time having a very candid discussion with the owners of the company, and understanding their vision, making relationship with them. कई बार Correct. क्या होता है इंडिया में, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स में बहुत कम जनों को रिवॉर्ड किया है ना, फ्यू सेक्टर्स को रिवॉर्ड किया है, तो कंपनी की कैपेबिलिटी है, लेकिन वो 500 करोड़ का ही मार्केट कैप है, कैपेबिलिटी मार्केट ने बाद में आइडेंटिफाई की होगी। इसलिए बहुत जनों का ज्यादा इन्वेस्टर से बात करने का मोटिव ही नहीं होता है कि यार ये पता नहीं स्टॉक मार्केट में क्या चलता है। आज भी ऐसे बहुत सारे प्रमोटर्स हैं जिन्होंने पहली बार डीमैट अकाउंट खोला था जस्ट बिकॉज उनकी कंपनी लिस्ट हुई थी, और आज तक उसमें और कोई ट्रेड नहीं हुआ है। तो उनका मार्केट से वैसे कोई लेना देना नहीं है, अपने बिजनेस पे ही फोकस करते हैं। बट जब वो मुझको एक साल देखते हैं जिम में, दूसरी साल देखते हैं, तीसरी साल देखते हैं, तो उनका रिलेशनशिप, वो खुलते हैं थोड़ा सा, आपसे रिलेशनशिप मेक श्योर करते हैं। जैसे इस बार हम जिस एजीएम में गए और हम जिस होटल में रह रहे थे, उस होटल में ही क्योंकि उसी रीजन में था जहाँ पे वो प्रमोटर्स और सबका होम टाउन था, तो उसी होटल में उन्होंने रात को एक पार्टी थ्रो करी थी फॉर देयर एम्प्लॉइज, एंड द होल फैमिली वाज देयर। And luckily we were at that hotel, and they just on the reception they saw us and they invited us over, and we got 4 hours of candid interaction with the senior most employees, with the young generation of the family, with the entrepreneurs themselves, which I could not have imagined, right? So इस तरह की चीजें हो जाती है आपके साथ, लक आपके साथ आ जाता है जब आप वो एफर्ट लेते हैं फिजिकली जाने का। एंड आई हैव सीन मैनेजमेंट जिनसे हमने कॉल अरेंज करने की ट्राई की है 3-4 साल से, और एजीएम में जाके दे बीइंग सो कॉर्डियल के तो सारी चीजों का आंसर कर रहे हैं, बिकॉज वो वाइब मैच जब होने लगती है ना एक एंटरप्रेन्योर की, कि भाई अगला इन्वेस्टर भी जो है वो एक एंटरप्रेन्योर के एंगल से सोच रहा है, वो कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं है, या कोई शॉर्ट टर्म पैसा लगा के मेरे स्टॉक को गिरा के भाग जाने वाला आदमी नहीं है। तो वो भी रिस्पेक्ट देते हैं और हम भी उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए भी it works a lot. So that is why we take the pains of actually attending the AGMs. So, do you suggest retail investors should at least visit one or two Yes, in your AGM? towns, आप जहां पे भी रहते हैं, चेन्नई में एजीएम्स होती है, सी लोगों का ये है कि इतना कौन ट्रैवल करेगा, बट आपके whichever city you are, find out listed companies and they are holding AGMs in wherever their plant nearby or the city nearby is. तो you would जो भी आपकी डोमिसाइल्ड ऐसी कंपनीज हैं, उसकी एक लिस्ट निकाल के एजीएम सीजन में आई विल रेकमेंड मेक अ विजिट. See, sometimes you'll have a good experience, sometimes you'll have a bad experience, but that experience would be worth it every year. Then try to increase the number of AGMs if you're serious towards your investing. ठीक है, तो ये करना चाहिए मेरे को लगता है definitely. And if I'm correct, even if you have one share of the company, you can go and attend their Yes, you AGM. can attend the AGM. आप एक शेयर लेके वहां 100 क्वेश्चन पूछ सकते हैं. AGM allows you to do that, right? आप एक शेयर रखो चाहे 1 लाख शेयर रखो, आपके पास राइट है वहां जाके कंपनी की बैंड बजाने का, क्वेश्चंस पूछने का राइट है आपके पास. You are entitled to do that. So please feel free and go. So it's a message to all our user base. Even if you want to start investing, build a position in a company, you can buy one share, ask the management, and then take a big sizable position in the company if you want. But Yeah, do visit the AGM at least once a year. of course. So Arvindji, in the light of all this that is happening, some geopolitical tension, US interest rates going up, the yields are near about 5% right now. So what is your take on how should a investor, आपके और मेरे जैसा investor या फिर कोई retail investor जो शुरू कर रहा है, how should he approach his investment in today's market? See, markets, और मेरा ये व्यू है, आई कैन बी प्रूवन रॉन्ग, बट पैनिक सेल ऑफ जो होता है ना मार्केट्स में, वो कई बार अननोन इवेंट्स की वजह से होता है, नोन इवेंट्स की वजह से नहीं होता है.
कोविड वॉज एन अननोन इवेंट और पैनिक आया। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस वॉज अननोन। अभी जो हम बातें कर रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर रशिया यूक्रेन वॉज एन अननोन इवेंट, इसलिए मार्केट एक बार पैनिक करके फॉल हुआ एंड देन धीरे धीरे चीजें स्टेबलाइज हुई। तो आप जो ये इंटरेस्ट रेट्स की हम बातें कर रहे हैं, पिछले 2 साल से ये बातें हो रही है, राइट? बट इट्स अ नोन इवेंट। ऐसा तो है ही नहीं ना कि कुछ ऐसा अननोन इवेंट हो रहा है। तो द पॉइंट इज, मार्केट को जहां प्रिपेयर होने का टाइम मिलता है, बिजनेसेस एडजस्ट करते हैं ना यार। सी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा क्यों है? क्योंकि दुनिया में इन्फ्लेशन है। दुनिया में इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपकी गुड्स महंगे हैं। गुड्स महंगे क्यों है? क्योंकि सप्लाई कम है ना डिमांड से। करेक्ट। तो महंगे है ना, तो आपको सप्लाई बढ़ाने पड़ेगा ना, गुड्स का, सर्विसेज का, पोर्ट्स हैंडलिंग कैपेसिटी का, या इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये तो पॉजिटिव है ना। इन्फ्लेशन नीचे आएगा जब इन्वेस्टमेंट करेगी पूरी दुनिया नए सप्लाई चेन्स, है ना। तो नई फैक्ट्रीज आएंगी गुड्स बनाने की, जो कि इन्फ्लेशन को नीचे लाएगी। तो इट इज पॉजिटिव फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां से हम सप्लाई चेन का ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं ना। तो हमारे लिए इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना, जिसका कोर रीजन इन्फ्लेशन है, इज नॉट दैट बैड। बिकॉज हम खुद स्टील बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत, है ना। हम खुद इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो हम तो इन्फ्लेशन का सोल्यूशन है वर्ल्ड के लिए। तो फॉर अ कंट्री लाइक आर्ट्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमारे यहाँ कंजम्पशन तो अभी तक होना है ना बहुत बाकी। तो करेक्ट। इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में कूल ऑफ होना होगा, ताकि हमारे यहाँ कंजम्पशन इकोनॉमी भी ग्रो करे। वो होएगी ना। तो अभी लेकिन कोई पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, सो देयर इज अ बुल मार्केट हैपनिंग इन अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑलवेज। हमारा तो ये फोकस है अभी कहाँ हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, जियो पोलिटिकल टेंशन है हमारे, तो इफ दे एस्केलेट, क्रूड गोज अप व्हाटएवर, तो हमारा मैक्रो खराब हो सकता है। लेकिन आज हमारा मैक्रो जो 2008 में अफेक्ट होता था उससे अलग है ना। आज हमारे ऑयल इंपोर्ट्स जितने हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स एक्सीड हो गए हैं उल्टा। तो पहले क्या होता था कि हम ऑयल मान लो $100 का ले रहे थे और हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 20-30 डॉलर का था, तो हमारा करेंसी पूरा डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन आज ऑयल से ज्यादा हम सर्विस एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं जितना ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो कुशन है ना हमारे पास। और इकोनॉमी इज नॉट दैट वनरेबल दैट इट वाज। तो ये जो सारी हम वरीज देखते हैं ना, मार्केट फॉल करता था ना पहले क्रूड बढ़ने से, अभी इतना नहीं कर रहा है ना। उसका कुछ तो रीजन है ना। उसका रीजन ये लोग बोलेंगे बबल है, ये है, ऐसा नहीं है यार। वी आर इन अ डिफरेंट period and a different economy. Yes, these things would trouble. Hence, market would go sideways or would maybe go down maybe in the coming 8-10 months, wherever the valuation corrects itself. But the point is, don't take it जैसे कि ये बेयर मार्केट चालू हो गया और पता नहीं अब इंडिया का तो स्टोरी खत्म हो गया, अब तो मार्केट छोड़ के भाग जाओ। ऐसा नहीं होने वाला है। आप उस समय ये देखें कि लमसम इन्वेस्टिंग करने का मौका कब है। if these things and this will things and no one can time the markets, right? कि मैं आपको बोल दूं कि करेक्शन अगले महीने आएगा, 6 महीने बाद, 8 महीने, मेरे को नहीं पता। लेकिन पॉइंट ये है, एक स्टॉक आज मुझे महंगा लग रहा है और मैं इसलिए नहीं खरीद रहा हूँ कि करेक्शन आए। मान लो करेक्शन 8 महीने बाद आएगा, वो स्टॉक 100 का हो जाएगा 200, वो करेक्शन आने के बाद भी 140 होएगा ना। तो मैं तो 100 से महंगा ही खरीद रहा हूँ ना। करेक्ट। तो आपके साथ ऐसा ही होता जाएगा अगर आप करेक्शन की वेट करो, राइट? डोंट ट्राई टू टाइम थिंग्स। मेक स्मॉल एलोकेशन, मेक बिग एलोकेशन, उस तरह से उसको लो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम इट इज। इफ देर इज सम कंपनी विच इज विनिंग ऑन ग्राउंड, ऑर्डर्स विन हो रहा है, ग्रोथ आ रही है, और ज्यादा आगे फ्यूचर अच्छा लग रहा है, ट्राई टू गेट अ पोजिशन इवन इन द मार्केट लुक्स एक्सपेंसिव। बाद में जब वो करेक्ट हो तो और खरीदो ना, कहाँ प्रॉब्लम। तो दैट इज वे टू अप्रोच द मार्केट। गॉट इट। तो बेसिकली टाइम करने के लिए रुकना नहीं है, और जैसे सारे वो फेमस कोट्स जाते हैं, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, इंक्रीज योर टाइम इन द मार्केट, बड़े टाइम के लिए मार्केट या में इन्वेस्टेड या रहिए। लोग एक सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड बी इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग वाइल, बट जब पोर्टफोलियो रिबैलेंस हो जाता है तो कोई स्टॉक 1 महीने में या फिर 6 महीने में निकाल दिया जाता है, तो इज दैट ऑल्सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? लाइक हाउ डू यू अप्रोच दैट? नो, सो नहीं, एक्चुअली देखो, प्रॉब्लम यह है कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या जब हम स्मॉल केस पे कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, प्रॉब्लम यह हो जाता है कि आपको हर क्वार्टरली उनका धंधा देख के आपको अपने स्टॉक्स को रीबैलेंस इसलिए करना पड़ता है कि आपको अगले बंदे का लॉन्ग टर्म होराइजन नहीं पता है, राइट? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मेरा 10 साल का होराइजन रखता हूँ, बट द इन्वेस्टर माइट हैव अ 1 ईयर होराइजन, 2 ईयर होराइजन, 3 ईयर होराइजन। इसीलिए हम हमारे स्मॉल कैप में, और वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज, हम सबको यही बोलते हैं 3 साल के कम का होराइजन हो तो हमारे साथ इन्वेस्ट ही मत करना, राइट? दैट इज द होराइजन दैट वी एक्सपेक्ट आवर इन्वेस्टर्स टू हैव। बट द प्रॉब्लम इज दैट वो 3 साल के अंदर वो स्टॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, राइट?
तो हम लोग रीबैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि मैं ऑन एन एवरेज सबके लिए रीबैलेंस करना चाहता हूँ, नॉट नोइंग व्हाट योर टाइम होराइजन। बट अगर आप लोग अपना पोर्टफोलियो स्टडी कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी मैं कोई नया स्टॉक ऐड करना चाहता हूँ उस समय मैं वैसे मेरा पुराना स्टॉक डिलीट नहीं करना चाहता, लेकिन एलोकेशन तो 100% ही है ना। तो होगा ये कि स्मॉल केस आपको बोलेगा कि रीअरेंज करते समय आप कुछ चीज बेचो, नहीं तो आपका 100 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ना, तो एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है। बट इफ यू वांट टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ वो टेक्निकल एडजस्टमेंट मत करो ना, इसलिए हम तो नोट भी भेजते हैं साथ में हमारे स्मॉल केस सब्सक्राइबर को कि आप सिर्फ ये स्टॉक एडिशन करो। there will be some trimming down of these stocks which will be suggested because वो automated 100% पे आना चाहेगा, but don't do that, keep that because those stocks are also doing well. So long term में as very rightly asked in this question, long term में wealth तो उनको रख के ही long term में बनेगी, right? Don't Correct. trim that even if you're given those because टेक्निकली आप सोचो 100 रुपए का पोर्टफोलियो बनाना है तो मैं कुछ ऐड करूंगा तो कुछ तो डिलीट होएगा ही, बट वी आर सेंडिंग आउट नोट स्पेसिफिकली नॉट टू सेल स्टॉक। हाँ, मैं जब सच में बोलूं टू ट्रिम दी एलोकेशन फ्रॉम 6 to 4, मैं नोट में पूरा लिखूं कि आप ये करो, देन यू शुड ब्रिंग इट डाउन बिकॉज मेरे को लगता है रिजल्ट कुछ खराब हो गया या वैल्यूएशन कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर चले गया, तब मैं ट्रिम करने का जरूर एडवाइस हम लोग करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू डोंट डू दैट्स अ बेटर स्ट्रेटेजी टू अप्रोच फॉर श्योर। Got it. So if I'm correct, anyone who is coming to invest in any of your small cap portfolios, he should have a minimum investment horizon of 3 years, not less than that. यस और जो भी पोर्टफोलियो का ट्रिम या माइनर फ्रैक्शनल सेल ऑर्डर्स आ रही है उनको अवॉइड करके आपको इन्वेस्टमेंट को पकड़े रहना है आपके। यस यस यस। Next question is, you're free to take it or leave it. People are asking, what should be our return expectations from your small case? It's free. If you want to take it, you can, See, or you can leave it. again the problem is that we are bound by SEBI to not give a lot of guidance on a lot of these things because SEBI doesn't want investors to get carried away and things, which is correct on SEBI's part। but मैं ये बोल रहा हूँ हमारी कंट्री एक एक्स लेवल पे ग्रो करने वाली है, राइट? उसकी खुद की कैपेबिलिटी है कि जीडीपी ग्रोथ है हमारा 6-7-8% की रेंजेस में चलेगा और इन्फ्लेशन चलेगा 5-6%, तो 13% की सेल्स इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी आप जोड़ दो तो बहुत सारी कंपनीज में आती हुई दिखेगी आपको। तो 13-14% से तो बहुत सारी कंपनियां ग्रो करेंगी। आप रिस्क लेते हैं स्मॉल कैप में आने के लिए क्योंकि आप 20% के ऊपर की ग्रोथ चाहते हैं, राइट? तो Correct. हमारा फोकस होता है 20% एंड अबव प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनीज के अंदर एंटर होने का। एंड हम पोर्टफोलियो इस एक्सपेक्टेशन से बनाते हैं कि आने वाले 5 साल में दिस पोर्टफोलियो शुड ग्रो बाय 20-22% एंड दैट्स हाउ वी ट्राई टू स्ट्रक्चर आवर पोर्टफोलियो। अगर वो प्रॉफिट ग्रोथ और वो आ गई तो पोर्टफोलियो का वो परफॉर्मेंस आना चाहिए। दैट इज हाउ वी ट्राई टू डू थिंग्स। Got it. Thank you for your answer, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने बोला स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में जो ग्रो हो रही है 20% से। सो लोग पूछ रहे हैं कि आप कौन से 5 पॉइंट हमको बता सकते हो कि जिससे कंपनी आउट परफॉर्म करती है, लाइक व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू लुक फॉर इन अ स्मॉल कैप कंपनी, इफ यू कैन शेयर वेरी सम गुड क्वेश्चन। सो स्मॉल कैप कंपनी में सबसे पहले हम उसका बिजनेस मॉडल समझते हैं, राइट? और हम ये ट्राई करते हैं कि उस बिजनेस मॉडल की पूरी चेन एनालाइज करें कि अगर मैं किसी एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर को उठा रहा हूँ या इंजीनियरिंग गुड्स में मान लो कोई गियर बनाने की कंपनी को उठा रहा हूँ, तो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, उसका प्लांट जो है वो कहाँ से वो लोग ने सेटअप किया था, चाइना से मशीन लगा के किया था, जर्मनी से मशीन लगा के किया था, उस पर कितना खर्चा किया था, उसके कॉम्पिटिटर के पास क्या कैपेबिलिटी है, वो कौन से आउटपुट मार्केट में जाके बेचते हैं, उनके पास कितने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है टू सेल इन द मार्केट, एक्सपोर्ट कितना करते हैं, डोमेस्टिक कितना सेल करते हैं। सो द पॉइंट इज हम पहले पूरा बिजनेस चेन ये समझ लेते हैं कि क्या इस एंटरप्रेन्योर की विनिंग रेट ज्यादा अगर है तो वो क्यों है, क्या वो रॉ मटेरियल सस्ता खरीद पाता है, क्या उसके पास प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर है, क्या उसकी मशीनरी सबसे वर्ल्ड क्लास है, क्या वो सेल्स टीम ऐसी रखता है जो कि वर्ल्ड क्लास है, या उसके पास एक्सपोर्ट मार्केट है, सर्टिफिकेशंस है जो शायद दूसरे लोगों के पास है, कई बार सर्टिफिकेशन लेने में 3-4 साल लग जाते हैं। तो हम पहले पूरे धंधे को एज एन एंटरप्रेन्योर समझते हैं कि मैं अगर ये धंधा करूं तो आज अगर मैं 500 करोड़ रुपए डाल के ये प्लांट डालूं तो इज इट वायबल और नॉट। अगर आंसर आता है यार 500 रुपए करोड़ डाल के 50 करोड़ ही आने हैं तो 10% ही आरओई छूटना है, तो धंधा करने लायक ही नहीं है, फिर तो हटा दो। तो हम एकदम प्योर सिंपल अर्थमेटिक एंड प्योर गणित लगाते हैं, इज अ बिजनेस वर्थ डूइंग। तो फर्स्ट हम बिजनेस का ड्यू डिलिजेंस करते हैं, सेकंड हम एंटरप्रेन्योर का ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि व्हाट इज द ड्राइव ऑफ द इंडिविजुअल, how he has grown his business to now, till now, and how he will take it forward, what is his drive, does he have the hunger still or not, is he ethical or not, how he behaves with his staff, how he behaves with his employees plus their supplier, right? पेमेंट टाइम पे देता है नहीं देता है,
उनका अननेसेसरी पैसा काट लेता है क्या, ये सब बहुत सिग्नल्स देता है एंटरप्रेन्योर के बारे में, राइट। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अच्छा बिहेवियर करता है अपने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, भले वो बैंकर हो तो क्या, भले वो आपका एम्प्लॉय हो तो क्या, भले वो आपका सप्लायर हो तो क्या, भले वो आपका कस्टमर हो तो क्या। आप सिर्फ कस्टमर के ये बिहेवियर को मत देखो, क्योंकि अगर कस्टमर के साथ आपका बिहेवियर अच्छा भी हो लेकिन आपके सप्लायर के साथ आपका अच्छा बिहेवियर नहीं है, वो टाइम पे आपको प्रोडक्ट ही नहीं देगा, तो आप सप्लाई क्या करोगे, राइट। Correct. सो बहुत ज्यादा मैटर करता है होलिस्टिकली हाउ द प्रमोटर इज। तो हम वो पूरा समझने की कोशिश करते हैं, उनके पास के लोगों से उनके सिग्नल्स उनके एम्प्लॉय से कैच करते हैं, यहाँ वो क्या उनका सप्लायर का उनके बारे में कहना है, उनके कॉम्पिटिटर का उसके बारे में क्या कहना है। कई बार आपको लगेगा कॉम्पिटिटर तो खराब बात ही करेगा, लेकिन एक रिस्पेक्ट होती है कॉम्पिटिटर की भी, एक बहुत ही क्रेडिबल कॉम्पिटिटर के लिए, और वो झलक जाती है उसकी कॉन्वर्जेशन में। तो हम उनके कॉम्पिटिटर भले वो लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, सबको जाके मिलने की ट्राई करते हैं। तो ये सब करने के बाद हम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस भी करते हैं, और हम फिर ये भी देखते हैं कि किस तरह की कंपनी अगर एल्सवेयर चाइना में कभी थी या यूएस में कभी थी, तो उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कैसी रही, और उसको वैल्यूएशन मार्केट ने दिया नहीं दिया। क्योंकि मेरी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर वैल्यूएशन ही मार्केट ना दे, तो सेक्टर ऐसा होना चाहिए या कंपनी ऐसी होनी चाहिए ना कि जिसको इंस्टीट्यूशंस भी होल्ड करना चाहे, आगे जाके वैल्यूएशन मिले। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग करने की ट्राई करते हैं, एंड देन व्हेन वी आर रेडी विद ऑल दीज थिंग्स एंड वी गेट आंसर टू गो अहेड, देन वी ट्राई टू एलोकेट। I'd say that is an approach that has helped us over the long. ओके श्योर। सो मैंने तो 5 ही बोली थी, आपने मिनिमम 50 पॉइंट्स नोट कर दिए कि क्या देखना चाहिए कंपनी में। तो आई एम श्योर लोग जो देख रहे हैं वो पेन एंड पेपर लेके नोट कर रहे हैं ये सारी चीजें, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू डोंट गेट टू रीड और इवन फाइंड आउट ऑन एनी ब्लॉग की रिसर्च कैसे करें कंपनी के बारे में, बिकॉज दिस इज लाइक गोल्डन नॉलेज दैट नो वन पासेस ऑन टू एनीवन। एंड रिसर्च सिंपल भी है आदित्य, आप कर सकते हो, screener.com सबके पास है आज। बट आप समझो, आप एफर्ट जितना लोगे रिवॉर्ड उतना मिलेगा ना। अगर आप घर पे बैठे बैठे स्क्रीनर से ही मल्टी बैगर निकाल सकते हैं, वो जो निकलते थे 10 साल पहले, क्योंकि इन्वेस्टिंग जनता ही नहीं होती थी, राइट, बहुत कम जन होते थे जो स्क्रीनर की भी नॉलेज रखते थे। आज तो सबको सब नॉलेज है यार। वी हैव नॉलेज एक्सेस अवेलेबल टू एवरीवन एट देयर एट द सेम टाइम। So what is your winning, you can say, thing in the market? Your effort. And if you don't make that effort, स्क्रीनर पे जब रिजल्ट आ गए ना यार, तब तो वो स्टॉक ही भाग जाएगा, फिर तो आपको वैल्यूएशन ही नहीं मिलेगा ना। द पॉइंट इज दैट, एंड आई रिस्पेक्ट, स्क्रीनर इज रन बाय वन ऑफ अ वेरी क्लोज फ्रेंड आयुष मित्तल, सो आई रिस्पेक्ट द टूल दैट दे मेड। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, स्क्रीनर प्लस और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी अगर आपको वो अल्फा जनरेट करना है। तो बेसिकली स्क्रीनर पे जब आपको जो एल शेप लाइन दिखती है तो आप वहां से स्टडी कर रहे हो तो शेयर ऑलरेडी भाग चुका है, आपका कहना है। Yes, 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 Got it. yes. You have to study it before the run up. So this brings me to my next question. I have heard that people have made a lot of money in small cap stocks and small cap investing, but I've not noticed any retail investors who have made money. So are retail investors making money in small caps, or they are very small cohort of people who are making money? And this is a very, very good question, Aditya. And we've not typically seen a lot of retail audience making money in small cap. We've only seen HNIs or marquee investors, as I told you at the beginning, that we've seen the most, biggest of investors of our country, be it Mr. Govind Parekh or, be it Vijay Kedia or maybe Ashish Kacholia, Mukul Agarwal. All these people have made money in small caps only, right? Why doesn't a retail make money in small cap? Because again, उनके पास उतना ज्यादा कहीं कहीं ना कहीं पे टाइम का शॉर्टेज, या मार्केट में लोग डरा देते हैं, और बिहेवियरली दे के नॉट होल्ड द स्टॉक व्हेन द स्टॉक फॉल्स बाय 40% एंड दे एग्जिट एट द वेरी बॉटम। ये बिहेवियरल चैलेंजेस है। लेकिन आफ्टर कोविड आई हैव रियली सीन retail people making money in small caps. I've seen people who had a 6-8 lakhs portfolio have become a 80 lakhs or 90 lakhs or a crore. People having portfolio less than 10 lakhs have grown that portfolio and become more than 50 lakhs or a crore portfolio. That is something very heartening. For the first time, I'm seeing the retail being informed. I am surprised. There are a lot of conferences, which, for example, the investing accelerator summit which gets held in Goa every year. There are a lot of retail participants come, and the level of knowledge they have, and they've been tracking that company, and they ask me questions. Exam for that matter, I am
सरप्राइज कि यार ये तो मेरा एनालिस्ट भी इतनी डिटेल में नहीं जा रहा है जो एक रिटेल बंदा जा रहा है, विच इज फैबुलस। पीपल ऑन यंग एज लाइक 15-16, मेरे को एक बंदा मिला 15 साल का, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है और मार्केट्स को फॉलो कर रहा है, विच इज फिनोमिनल। सो अगेन, लोग रिटेल के पावर को कम आंक रहे हैं। इस बार एफआई को मेरे ख्याल से जो सबक सिखाया रिटेल ने सिखाया है कि बस इस बार हमारे देश को आप बेच के जाओगे ना, आपको सस्ते में नहीं मिलेगा। 2008 में वो बेच के गए थे, उनको वापस से सस्ते में इंडिया खरीदने मिल गया था। दे आर स्ट्रगलिंग राइट, लास्ट ईयर ऑल एफआई सोल्ड, they're not able to buy back in our country at a very reasonable price because सारा रिटेल ने एसआईपी कर करके मार्केट को गिरने नहीं दिया है ज्यादा, राइट? सो it has changed, retail has become more informed, hence I will urge that you become even more informed. प्लीज डोंट गो बाय दिस ट्विटर स्टोरीज और बहुत ज्यादा जो ज्ञान मार्केट में मिलता है, या इंस्टाग्राम पे लोग रील बनाते हैं, या कोई भी एसएमई आईपीओ को लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एसएमई में फ्रॉड है बहुत जगह पे। आई विल रिकमेंड यू गाइस कि एसएमई की कोई कंपनी देख रहे हो तो बहुत अच्छे से देखो, ड्यू डिलिजेंस करो और अच्छे से उठाओ। जस्ट बिकॉज आईपीओ क्रेजीली ऊपर भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होएगा। तो क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है अभी तक, मेक श्योर कि आपने जो वेल्थ कमाई है उसको इरोड ना होने दे, आगे भी अच्छा काम करे एंड इंक्रीज योर एफर्ट। दिस इज अ टाइम एंड एफर्ट इन द पोर्टफोलियो वुड गो अप। इजी पैसा बन गया, अब पैसा हार्ड बनेगा, तो आपको और एफर्ट करना है, देन डेफिनेटली रिजल्ट्स वुड कम योर वेल। एटलीस्ट आप नुकसान बहुत ज्यादा नहीं करेंगे अगर आप एफर्ट इन द पोर्टफोलियो बढ़ा देंगे। यू विल स्टे इन्वेस्टेड एंड यू वुड मेक इवेंचुअल गुड रिटर्न अगर आप एफर्ट बढ़ा देंगे। तो प्लीज increase your efforts. I am a strong believer that this time retail in our country would become would have stories of success to share that like they were never before, which has happened in US. See, in US also there was a generation of people which were disbelievers. Until 80s they were disbelievers, and they just missed the biggest rally of their lifetimes in the US. But when they became believers, they made the money of their lifetimes, right? So ये हर देश में होता है, हमारे देश में भी होगा ना। तो we will also have people who make a lot of money if they turn believers and they do their due diligence and do proper investing for sure. सर, आपने बोला कि जिसके पास 10 लाख 20 लाख का पोर्टफोलियो है, आज उनका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया है। तो दो तीन आप मुझे क्वालिटी स्टेट्स बताओगे क्या, क्वालिटी जो ये इन्वेस्टर्स के पास थी, जिनके कारण ये इतना पेशेंटली रुक पाए कि 20 लाख का पोर्टफोलियो आज 1 करोड़ का हो गया? क्योंकि स्मॉल कैप इज अ वोलेटाइल स्पेस, राइट? 20 तक का स्टॉक टूटता है तो Correct, सबको डर लगता है कि भाई correct, अभी और बीस correct, तक correct, का टूट जाए। तो correct, जस्ट नेम correct. क्वालिटीज दैट यू थिंक इन्वेस्टर शुड हैव टू टेक हिज पोर्टफोलियो फ्रॉम 20 to 1 CR। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो जो एक यूनिक एबिलिटी इन सब में थी ना, देवर इन्वेस्टर्स जो वैसे कई बार आपको लगेगा कि आपका सिर खा रहे हैं यार, आपको 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे, बट they were very adamant on understanding all nuances of the portfolio that they were holding. And when they understood, they concentrated their bets. 100 कंपनियां लेके आपका 20 करोड़ का 1 करोड़ नहीं बनता है। आपको चाहिए आप 15-20 फोकस्ड कंपनियों में पैसा डालो, तब वो पोर्टफोलियो। और कोई एक विनर, बहुत लार्ज आपका विनर जब बन जाता है, एक या ऐसे दो विनर लोगों के बने जो लोगों ने होल्ड किए। हमारे स्मॉल केसेस में हुआ है, ग्रीन एनर्जी में हमारे पास एग्जांपल्स है जहाँ पे लोगों ने एक एक स्टॉक में मान लो कि कुछ लैक्स इन्वेस्ट करके दे मेड 7-8x ऑन दैट स्टॉक। वो बोरोसिल रिन्यूएबल हो या बहुत सारी ये कंपनी हो विच है। सी प्रॉब्लम ये है कि रिटर्न तो मार्केट दे रहा है आपको, लेकिन आप महंगा समझ के उसको बेच जा रहे हैं, तो आपका पैसा नहीं बनेगा ना। तो किसी ने मान लो हमारे पोर्टफोलियो में कोई कंपनी देखी 2021 में, जब ग्रीन एनर्जी का पूरा मार्केट टर्न अराउंड हो रहा था, और उन्होंने खुद अपना मेहनत बढ़ाया, हमको रीच आउट किया, अलग से क्वेश्चंस पूछे, खुद से ड्यू डिलिजेंस भी किया, कॉन कॉल भी अटेंड करी कंपनी की। कोई भी अटेंड कर सकता है कॉन कॉल का, तो आजकल बीएससी पे नोटिफिकेशन आता है, यू एज एन इन्वेस्टर कैन लॉग ऑन टू द कॉन कॉल। अच्छा, कॉन कॉल उस समय लाइव नहीं आप देख पाए तो आजकल आप यूट्यूब पे जाके सारे कॉन कॉल्स जो है ट्रेंड लाइन या उनपे अपलोड हो जाते हैं, वहां पे जाके सुन लो आप। तो ये मेहनत करी, और मान लो उन्होंने 2 लाख रुपया एक स्टॉक में डाला था, तो धीरे धीरे उसको स्केल अप करके 5-6 लाख रुपया किया, और कुछ 2 या 3 उनके विनर्स बन गए। सो ये कॉमन है सब, कि उन्होंने एक तो पोर्टफोलियो में 100 कंपनियां नीली श्रिंक किया उस बास्केट को, विद इन दैट ऑल्सो 2 या 3 विनर्स में उन्होंने पैसा थोड़ा और ज्यादा लगाया, अपनी खुद की स्टडी बढ़ा के, अपनी खुद की कन्विक्शन बढ़ा के, तब वो जब स्टॉक मल्टीप्लाई हुआ ना, तो वो वेट कर पाए। एक कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में थी जो कंडक्टर्स और केबल्स बनाती थी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, राइट? कुछ लोगों ने उसको होल्ड करके पैसा बनाया। मिड एंड स्मॉल कैप में वी हैड अ कंपनी कॉल्ड, जो मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया कि भाई जो शंट रजिस्टर में लीडर है मान लो हमारी कंट्री में। अगेन, लोगों ने अपनी खुद की कन्विक्शन से ही पैसा बनाया। मेरी करेक्ट। कन्विक्शन आप
वो एक हद तक आपका साथ दे सकती है, राइट? अपनी एंड एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कुछ कोई वंडरस पोर्टफोलियो बनाया। ये मेहनत अगले बंदे की थी, जिसने वो काम करके कन्विक्शन लेके अपना एलोकेशन थोड़ा बढ़ाया और होल्ड किया तो पैसा बना। तो ये जरूर मेरे को लगता है कि एक एबिलिटी जो मैंने देखी जिन लोगों ने पैसा बनाया उनमें है। तो आई जस्ट समराइज, अगर आपको 20 लाख का पोर्टफोलियो ग्रो करना है साइजेबल पोर्शन पे, फाइनेंशियली अर्ली रिटायर होना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, तो फोकस पोर्टफोलियो रखिए। एक दो स्टॉक्स आपके ऐसे होने चाहिए जो विनर होने चाहिए। अरविंद जी आपको क्वालिटी पोर्टफोलियो बना के दे रहे हैं जिसमें 15 से 20 स्टॉक्स है। तो ऐसा नहीं है कि आपका काम वहां पे खत्म हो रहा, आपने सब्सक्रिप्शन पे कर दी और पोर्टफोलियो लिया। यू शुड पुट सम ऑफ योर इनपुट, यू शुड स्टडी द पोर्टफोलियो वेल, और ऐसे कंपनीज चूज कीजिए जिसपे आप और यस, आपका पोजीशन बड़ा कर सकते हो, जिसके कारण आप एक यस, साइजेबल पोर्शन रखोगे वो कंपनी में। क्योंकि जब तक आप स्टडी नहीं करते हो ना, आपका कन्विक्शन नहीं बिल्ड होता। तो करेक्ट। build your conviction and then your portfolio can reach to this kind of sizable proportions. So we have reached the 12 o'clock mark and I'd like to conclude now. But if anyone has any questions, my team will be sharing a Google form in the chat section. You can always share your questions and we'll reach out to you and we'll make sure that we answer each and every of your doubts. So Arvindji, it was a pleasure hosting you on our स्मॉल केस चैनल, स्मॉल केस यूट्यूब चैनल। आप जो क्वालिटी शेयर करते हो, आपका जो कन्विक्शन है, आप जो सेक्टर में हो, आई एम अ रियली बिग फैन ऑफ योर्स एंड आई रियली होप यू डू वेल एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर एंड एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू यू। Thank you so much, Aditya, and happy Diwali to you and all our audience. Thank you so much for patiently listening and asking such wonderful questions. Hope to see you soon and wish you all your families a very happy Diwali and a prosperous new year. Thank you. And if you have interest in stock market and if you want to learn more, stay tuned to our YouTube channel and we'll be sharing more of such insights with more of fund managers with you. Thank you for listening. Happy Sunday. Bye.